Hello everyone. So we are back with a new series. This time I'm uploading the series on database management system, which is also known as DBMS. So in this series I'm focusing on the introduction of DBMS. Then it's one of its model which is known as the RDBMS, that is Relational Database Management System. Then one of the RDBMS software which is MySQL. So basically the introduction about MySQL, then its commands and syntaxes, and furthermore few functions. There are text function, math function and other date and time functions. So in our today's lecture we are going to focus on the terminologies in DBMS, then its advantages, after that disadvantages. So first one, the terminologies. In this first term is data. So what is a data? If I'm asking you, many of you say this thing that what is a data? Data is information. No children, there is a slight difference, a slight line difference, a thin line difference between data and information. So basically the raw facts, or you can say that it can be any audio file is a data, any anything, you can say that any name, any other card information, your name, your text, any other thing. Okay, newspaper, any video file, chart or table, then a book, all of these things are data. So basically data is the raw facts of figures. Okay, any raw fact of figure is known as data. Anything which is recorded is known as data. Or known facts is also data. If you're having a fact that 90% of data is this kind of thing and 10% is structured, or you can say that we are having this number of whales in the country. So basically these are the known facts to you, that the height of Everest is 8,848 meter or it is 8,838 meter. So basically these are the facts, non-facts to you. So this is a data. You are actually getting the data, factual records. So basically a factual record which is used for recording, reassuring, measuring, okay, discussion, evaluation or calculation purpose, that is known as data. Okay, I think it's pretty much clear to you. So you can say that any text file, audio file, video, table, book, newspaper, weight, prices, etc. all of these things are data. Right? If I'm storing a name of a person, it's a data for me. We are storing a mobile number, it's a data for me. Right? Now the term comes information. What is an information? So we are having data. We know that what is a data? Any raw fact or figure which is recorded, it's known as data. If we process it, evaluate it, organize or classify it so that it results in a meaningful information to the user, then it is known as information. Basically, it's a meaningful thing to the user, then it is known as information. Now, for suppose we are having subject name, we are having time, we are having periods, and we form a timetable from it, then it's an information for us, right? Now, we have recently received the results of 12th CBSE and 10th board and etc. board's result. So we are having a merit list all the time from various reasons of CBSE. So what it is, that merit list is information that person topped CBSE board, right? So it's a information. Report cards, you are receiving your report card at the end of a session. What a report card is consisting of, a report card is basically consisting of the marks you get. So it's an information for you that this is the total percent you are getting, or this is your CGPA that you are getting. Okay, these are the marks in your subjects, so this is your final result. So what it is your information. Okay, same case with the receipts, that we are, for suppose we are going in a market and we are purchasing something. हमने वहाँ से कुछ purchase किया. We are purchasing different list. We are purchasing biscuits, we purchase Maggi and salt, cold drinks, etc. Wafers and all these things. Under the daily use things. So at last we are getting a receipt that this is your orders, this is your total price. So what is it? It is an information. We have collected the different data. They collected it. उन्होंने अलग अलग चीजों का price लिखा, आपको पूरा एक receipt बना के दे दिया. So it's a information for you, right? Same case, we are showing the records about different people. So there's an information. For suppose we are having records of students in our school, right? तो आपके record में आपके parents का name होगा, उनका प्लेस होगा, एड्रेस होगा, प्लेस एड्रेस, योर मोबाइल नंबर, योर लास्ट क्लास, योर लास्ट परसेंटेज. तो
इन डेटा को फॉर्म करके हमने क्या एक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया कि आपका इन्फॉर्मेशन, इफ वी आर आस्किंग एडमिशन नंबर 1435 का रिकॉर्ड दीजिए, तो वो मेरे लिए क्या होगा पूरा, इट्स एन इन्फॉर्मेशन फॉर मी. So this is information. So basically the processed or evaluated data, or you can say the organized or classified data which is having some meaning to the user, then it is known as information. Now the next term arises, what is a database? Till now we came to know about data, we came to know about the information, and if I say in the terms of computer, the input which we are providing to the computer, it is a data, and the output which we are getting, it's information. It's a processed data, so basically it's an information. Now from data we are going to form database. What is a database? Okay, we have already heard about these kind of things, that in school we are having a database, exam center we are having a database, government is having a separate database, same case with the companies, bank, airlines, railways, they are having separate kind of databases. Now what a database is? So basically what is a database? It's an organized collection. Okay, एक organized collection है. How we are saying it's an organized collection? For suppose we are going for shopping in a mall, right? So they are saying that freeze items are there in this shelf. Okay, you are having items made up of bread is there, you are having pulses in a separate area, you are having wafers and namkeens in a separate area, same case you are having masalas or right spices in a separate area, same case with the cold drinks and biscuits and your conditioners and other things. तो सबका एक organized collection है. So basically database is an organized collection. पर किसका organized collection? So it's an organized collection of interrelated data, or you can say that the structured data. Why I'm saying it is interrelated data or structured data? So let's focus on the first term, interrelated data. What is an interrelated data? Now suppose I'm working in a school, right? Your people are studying in a school or a college. So a school is having a separate database, right? Same case, railways or the reservation sites are having the separate database. If I want to put these two databases together, it's not easy for me because they are not related. In reservation sites, we are having different types of reservations, different people, they are having various jobs and other requirements are there. Whereas in a school, we need a student requirement, or we need the data about the teacher, student management, etc. We have no need to that kind of reservations or other things. Okay, so basically these are two different databases. These are two different data that we can get information from these two data if we are relating it together. Okay, these are basically separate ones. Okay, हमारे पास एक स्कूल का डेटाबेस है, एक हमारी कंपनी का है, एक रेलवेज का है, एक एयरलाइंस का, तो इन सबके डेटाबेसेस अलग हैं. तो हम सिर्फ किन डेटा को साथ में रख सकते हैं जो रिलेटेड हो. अगर मैं स्टूडेंट और टीचर का डेटाबेस बना रही हूँ तो मैं रख सकती हूँ क्योंकि स्टूडेंट और टीचर रिलेट करते हैं एक दूसरे से, राइट. अगर मैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स का रिजल्ट और अगर मैं नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम, इनको रिलेट कर रही हूँ, मैं रख सकती हूँ इनको एक साथ बिकॉज ये रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, राइट. बट इफ आई वॉन्ट टू पुट द स्टूडेंट एंड टीचर डेटा विद द एयरलाइंस वन, मैं उनको नहीं रख सकती, वो इंटर रिलेटेड नहीं है. नाउ द नेक्स्ट टर्म अराइजेस स्ट्रक्चर्ड डेटा. What is a structured data? So basically structured data means data which confirms a data model. Data which confirms a data model. Data model means एक particular organization के according एक particular organized form में आप उसको रख रहे हैं. डेटा मॉडल मतलब इट कैन बी ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल, मतलब या तो वो टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो लिंक्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो ग्राफ की फॉर्म में हो रहा है, किस फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, दैट इज अ डेटा मॉडल. ओके, so basically what is a database? It is an organized collection of interrelated data or structured data, okay, which serve different applications. Now for suppose if I'm creating a database for a school, तो मेरा उसका एप्लीकेशन अलग है. मुझे वहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, टाइम टेबल की, सैलरी की, स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स की, क्लासेस की, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है. सेम केस में आई एम फोकसिंग ऑन द डेटाबेस ऑफ अ रिजर्वेशन सिस्टम और एयरलाइंस रिजर्वेशन, तो मेरे पास वहाँ रिक्वायरमेंट्स क्या है, फ्लाइट्स की, देयर सोर्स, देयर डेस्टिनेशन, देयर प्राइसेस, देयर डिस्काउंट्स एंड अदर थिंग्स, तो मेरा उनका रिक्वायरमेंट्स है. इफ आई एम स्टोरिंग अबाउट द कंपनी, तो मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है, एम्प्लॉयज का सैलरी, देयर हाइक, देयर प्रोजेक्ट्स,
their clients, their links, तो ये मेरा database होगा. So basically database is an organized collection of interrelated data or structured data which serve different applications. We are having different types of examples of database. It can be of a company, it can be of a school, it can be of government bank, etc. Okay. Now, next one. Next term we are having is database management system. So, what is DBMS? DBMS is database management system. So, DB is a database. Okay, MS is management system. So, basically, it is a software which is used to manage databases. In simple terms, if I say, then I can say that it's a software which is used to manage databases. Then it is known as database management system. After that, example, we are having MySQL, NoSQL, Informix, DB2, Oracle, SQLite, Assist. So there are various types of DBMS or the database management systems we are having or we are using in our daily life. Okay. So now our next topic for today's lecture is advantages of DBMS. So first advantage of DBMS is reduces redundancy. On which thing we are calculating its advantage or we are checking its advantage from किस पे कर रहे हैं इसका advantage check? File based system पे. In earlier times, file based system basically कौन सा system था? Pen paper based system, right? It's a pen paper based system. Now, if I'm storing my data on a pen paper base, मैंने एक paper बनाया, एक register लिया, मैंने उसके अंदर सारा data store कर लिया, right? I stored all the data. अब क्या हुआ कि मैंने उस data को store तो कर लिया. अब मेरे पास कोई टीचर गया या कुछ नया पर्सन आया या उस पर्सन ने कुछ और नए ऑप्ट किया या कुछ चेंजेस करवाए तो मुझे उसको नेक्स्ट नए पेपर पे नोट डाउन करना पड़ेगा, नया रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा. सो बेसिकली वहां पे क्या क्रिएट हो गया? डुप्लीकेसी. एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे पास पहले था, उसने बीच में स्कूल लेफ्ट किया, देन अगेन ही जॉइन दैट स्कूल, तो फिर से अगेन उसका रिकॉर्ड क्रिएट हुआ. सो इट creates duplicacy of data. So basically redundancy is duplication of data. Now let us take another example. I am running a college, right? मेरे कॉलेज में मेरे पास दो मेजर है, एक मैथमेटिक्स मेजर है, एक म्यूजिक मेजर है. एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्टेड है, वो म्यूजिक में भी इंटरेस्टेड है, उसने दोनों जगह खुद को रजिस्टर कर दिया, तो उसका जो डेटा है वो मैथमेटिक्स में भी है, उसका डेटा म्यूजिक में भी है, राइट? दोनों जगह उसका डेटा है, तो वहां पे क्या क्रिएट हो गया? डुप्लीकेशन. अगर अब मुझे एक्सेस करना है उस स्टूडेंट को, उसके नेम से एक्सेस करती हूँ तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे मैथमेटिक्स वाला लेना है या मुझे म्यूजिक वाला लेना है. दोनों का रिजल्ट अलग, दोनों में चीजें अलग, बट डेटा जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो तो सेम है. सो इट रिजल्ट्स इन द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. नाउ फॉर सपोज उसका एड्रेस चेंज हो गया, राइट? उस पर्सन का एड्रेस चेंज हो गया, उसने मैथमेटिक्स में अपडेट किया और म्यूजिक में नहीं किया. दैट पर्सन फॉरगॉट टू अपडेट इन म्यूजिक मेजर. अब क्या क्रिएट हो गया? वहां पर डेटा अलग, यहाँ पर डेटा अलग. सो इट रिजल्ट्स इन द इनकंसिस्टेंसी. व्हाई इट इज इनकंसिस्टेंसी? क्योंकि डेटा सेम रहा ही नहीं, दोनों जगह डिफरेंस आ गया. तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हो गई? एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई कि हमें एड्रेस ये वाला एक्सेस करना है, ये एड्रेस ये करेक्ट है. सो इट रिजल्ट्स इन द इनकंसिस्टेंसी. बेसिकली when two copies of same data arises but they are not having the correct information, the same information, okay, तो हम उसको क्या कहते हैं? It's an inconsistency. Okay, so it is controlling it. Fine. Next, अगर मेरे पास inconsistency create हो गई तो मेरे साथ मेरा next goal क्या होगा? next challenge क्या होगा? integrity को maintain करना. What is integrity? Integrity means correctness or you can say accuracy of data, validity of that data. जब उस पर्सन का जो डेटा था, जो उसका एड्रेस था, मैथ्स में अलग म्यूजिक में अलग हो गया, तो करेक्टनेस नहीं रही, वैलिडिटी नहीं रही, एक्यूरेसी नहीं रही, तो मेरी जो इंटीग्रिटी थी वो सही नहीं रही, मेरा डेटाबेस उसको मेंटेन नहीं कर पाया. सो फॉर दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल बेस्ड सिस्टम, दैट इट रिड्यूसेस द रिडंडेंसी, वो उसकी डुप्लीकेसी को कम करता है. ओके, वी कैन कंट्रोल द डुप्लीकेसी विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशंस, राइट? आफ्टर दैट अगर मेरे पास डुप्लीकेसी हो गई तो वो इनकंसिस्टेंसी को जनरेट कर देगा. अगर उसमें चेंजेस हो गए तो, अगर चेंजेस हो गए और इनकंसिस्टेंसी जनरेट हो गई, मतलब हम इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे. सो बेसिकली इट हेल्प्स एंड रिड्यूसेस रिडंडेंसी, इट कंट्रोल्स द इनकंसिस्टेंसी, इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी. ओके, नेक्स्ट थिंग, इट हेल्प्स इन बैकअप एंड रिकवरी. नाउ फॉर सपोज
हमने डेटा पहले पेन पेपर या बैंक में पहले पेन पेपर बेस्ड रिकॉर्ड होते थे, राइट? या किसी कस्टमर ने, किसी शॉपकीपर ने अपना रिकॉर्ड रख रखा है, लेजर होती है, उसके अंदर हम रिकॉर्ड रखते हैं. कॉमर्स वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, दे आर हैविंग अ लेजर, दे हैव टू कीप अ लेजर जिसमें हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. और यू कैन से हमने कोई नोट्स बनाए एंड वी आर पुटिंग इट अ फाइल पेपर बेस्ड, राइट? बारिश आ गई, हमारा पूरा का पूरा नोट्स जो थे सारे इंक सारी हट गई, कुछ भी विजिबल नहीं है अब, तो हमारे नोट्स वेस्ट हो गए, हमारी सारी की सारी मेहनत खराब. सेम केस, किसी शॉपकीपर ने अपना डेटा रखा, एक लेजर रखी, उसके वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, फायर, अब क्या होगा? सारा का सारा लेजर बर्न हो गई, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. सो डेटाबेस प्रोवाइड्स अस द बैकअप एंड रिकवरी. अगर हमारा सिस्टम क्रैश रहता है या कुछ, अगर हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है, वी आर हैविंग इट ऑन क्लाउड, तो आप उसको इजीली रिकवर कर सकते हो, आप अपना बैकअप ले सकते हो. नाउ द नेक्स्ट arises the same case backup and recovery, it's restoring of databases. Now the next arises ensured security. When we are working on a database, तो हमें एक authorization provide करता है. If we are not providing the proper password, the correct password, तो वो हमें authorized user नहीं मानेगा, वो उसको access ही नहीं करेगा, वो उस window को close कर देगा. So basically it's the protection to authorization. It is ensuring the security that you are not a valid user or you are a valid user. After that only you can access that database. Now next or the last one, facilitate the sharing of data. We can share our data using we are sitting in same system, a single system. हम एक system use कर रहे हैं, हमें बहुत सारे लोगों से अपना डेटा शेयर करना है, तो हम उस फाइल को मेल कर सकते हैं, हम उसको शेयर कर सकते हैं, हम उससे प्रिंट ले सकते हैं, हम बाकी सारी जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उस पर सेंड कर सकते हैं. So it features also the sharing of data. So these are the advantages of DBMS over the file-based system. Now our next topic is disadvantages. So first disadvantage, it is management of complexity or management complexity. Why I'm talking about the management complexity? मेरे पास database है, right? I'm using it. मैं उसको use कब कर पा रही हूँ? जब मैं उसे जानती हूँ. I know that thing, how to work on it. Okay, I know how to work on MySQL, I know how to work on MongoDB or any other database, NoSQL or Oracle, तो मैं उस पर काम कर पा रही हूँ. If a person who is not able to work on that or that person is not having any knowledge about Informix or DB2, तो उस पर काम नहीं कर पाएगा. So same case, if we want to work on a DBMS, we need a person, a proper, you can say that a database administrator, DBA, or a person who used to work on it, who know how to work on it. So it's a management complexity that is related to a human resource. Okay. Next we are having is increased cost. When we are working on a proprietary software, we are having two different kinds of software. One is proprietary, other one is open source. Proprietary means we have to purchase it. We have to purchase the license, only then we can use it. Whereas open source are free of cost. We can use it. We can just download it and we can use it. Now, if we are using a proprietary software, so we need to purchase it. हमें हमारा सिस्टम है वो भी उसी लेवल पे चाहिए होगा. If I want to work on Oracle 15G, तो मैं उसके लिए Windows XP यूज नहीं कर सकती. I need to use Windows 7, 8 or 10, right? Even 7 is not valid nowadays, so we have to use Windows 8 or 10. So same case, it requires the increased cost of materials that we are using, whether it's related to the system or it is related to the software prices. Okay, next thing, we are having complexity. Now, first one, management complexity is related to the humans, right? Human resource. This time the complexity is related to the system or the software. If a software is complex, okay, then we have to use the person who is specialized in that software. We need to use that person. We have to hire that person. Same case, if a software is very complex to use, we are not able to use that thing. तो उसकी complexity को minimize करना या उसको हमें understand करना, उस पे work करना, तो it takes time. Okay, हमें उसकी complexity हम कब चेक कर सकते हैं, कब उसको हम एक्वायर कर सकते हैं, जब हमें उसको हैबिचुअल हो. अगर मैं आपको कहूँ आज आपको एक्सेल पे काम करना है, इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल, यू कैन वर्क ऑन एक्सेल. if I told you to work on access, you can easily work on access. But if I'm telling you to work on MySQL or another NoSQL or other things, so it's a bit hard for you because you are not having any kind of knowledge about those softwares or working on those. So it's a complexity. Next we are having frequent upgrades.
So presently, if you are aware that MySQL is having the latest version is 8.0 or 8.7 something. Okay, so and in earlier times we were working on MySQL 5.5 in the year 2013 or 2010. So with frequent upgrades, things changes, your difficulties changes, your levels changes. For example, we can take the example of PowerPoint, right? The persons who are working on PowerPoint 2007 or 10, they are very less facilities are there, right? When the people who are working on PowerPoint 13, 16 to work करे, 19, उसके अंदर फीचर्स चेंज हुए, उसकी थियरीज चेंज हो गई, आपके पास बेटर फैसिलिटीज है, बहुत अच्छी फंक्शनलिटीज आ गई हैं, तो ये क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंग हैबिचुअल होना पड़ेगा. जो उसके अपग्रेड्स हो रहे हैं, वी हैव टू फोकस ऑन दोज अपग्रेड्स, हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा. कहते हैं ना दैट वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी. सो बेसिकली वी हैव टू मेंटेन दैट upgrades, right? So next one we are having, or the last one, keeping our system updated. So if I am working on MySQL recent latest version, or I want to use PowerPoint 2019 or any other software, Oracle 15G, तो मेरा सिस्टम भी उस अकॉर्डिंग होना चाहिए. आप जब फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, हम कुछ और चीजें यूज कर रहे हैं, तो इट्स बेसिकली यू कैन से दैट, आपने देखा होगा वहां पे लिखा आता है मिनिमम रिक्वायरमेंट, यू नीड क्रोम version 80 or above, you need Firefox version above this, okay, you should use HTML this one. So क्या है, वो उनका बेसिक नीड्स है. So that's why you need to keep your system updated for working on the recent softwares. If I want to use the Django or MongoDB or NoSQL or other Informix, various platforms I'm having, not only of the back end, I'm also having front end various platforms. तो अगर मुझे उनके ऊपर यूज करना है, तो मेरा सिस्टम भी उस अकॉर्डिंग अपडेटेड होना चाहिए. फॉर सपोज दे हैविंग मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसर i5, तो अगर मैं उनको i3 पर यूज कर रही हूँ, तो उसका यूज नहीं है, राइट? दे विल नॉट वर्क ऑन i3, सो आई नीड i5 processor for this, right? So in our today's lecture, we focus on the terminologies of DBMS, advantages of DBMS, then disadvantages of DBMS. Now we are having certain questions about DBMS. Now my first question is, database is a collection of. So basically what it is, database is a collection of data, right? And DBMS is a collection of program and data both, but database is a collection of data. Okay, so your answer is data. My next question, what is the collection of interrelated data and set of programs to access them, right? I told you before. So database management system, DBMS, is a collection of interrelated data and set of programs to access them. You can consider it as another definition, that it is a collection of interrelated data and set of programs to access them. Database is a collection of data, right? It's an organized collection of interrelated or structured data, whereas DBMS is having both set of programs and interrelated data. After that, DBMS should provide following features. What are the features? It provides us authorized access, correct? As we know about, it provides us a security, right? It ensures a security. Okay, it protects data from system crash, correct? It helps in the restoring and backup of data, and it's provided the safety of information security, correct? It also ensuring us a security. So our answer is all of these. Next one, which of the following is considered DBMS? Now, see here, we have no idea about FoxPro, right? Many of you haven't learned about FoxPro, what FoxPro is. So, Access is a database. We all know that thing. It's a Microsoft Access suite. We are having it. And this we are having Access, which is a database. Oracle is a database, correct. Then, if we are having two options, then by default, FoxPro is also a database. So, the answer is all of these. Okay. Now, the next one. Duplication of data at several places is called as. Duplication of data at several places is called as. What do you understand by this one? Duplication of data. We learned about the term redundancy, right? Duplication of data. So, the answer is data redundancy. Why I'm not going for data inconsistency? इनकंसिस्टेंसी कब जनरेट होगी? जब हमारे पास जो दो डुप्लीकेट डेटा थे, उनके डेटा चेंज हो गए. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक स्टूडेंट साइंस में भी है, मैथमेटिक्स मेजर में भी है, और एक स्टूडेंट म्यूजिक में भी है, राइट? तो उसने दोनों में रजिस्टर किया, बट उसने अपना एड्रेस एक में चेंज किया, तो वो डुप्लीकेसी की जगह क्या क्रिएट होगी? उसके बाद इनकंसिस्टेंसी. पहले डुप्लीकेसी थी, जब एड्रेस चेंज कर दिया तो क्या क्रिएट होगी हमारे पास? इनकंसिस्टेंसी, राइट? सो बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ डेटा
at several places known as data redundancy. Isolation means single type of data, single data. Atomicity means we have to create, or you can say that it's a complete work, indivisible work. So usko hum kehte hain atomicity. Fine. So basically duplication of data is data redundancy. Now next question. Data redundancy increases the cost of storing or retrieving data. Yes, correct. It increases. If I am storing duplicate data, तो मेरी मेमोरी लेगा, मेरे को उसको रिट्रीव करने में एम्बिग्यूटी होगी, मुझे मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो और अच्छे लेवल पे लाना पड़ेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और इंक्रीज करना पड़ेगा. सो बेसिकली इट इंक्रीजेस द कॉस्ट. Now next, if in a redundant file system common fields are not matching, then it results in, I told you before that I was having data duplicacy or data redundancy. अब वो चेंज हो गए, उसमें चेंजेस हो गए, तो उसमें क्या आ गया, इनकंसिस्टेंसी. सो बेसिकली जब रिडंडेंट फाइल सिस्टम मीन्स डुप्लीकेट फाइल्स में कोई कॉमन फील्ड्स मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या आएगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी. और जब हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गई तो वो किस में रिजल्ट करेगी, डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हम उसकी एक्यूरेसी मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे. जब हमारी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रही तो वो क्या हो गया वहां पे, डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस कन्वेंशनल फाइल सिस्टम देन डेटाबेस सिस्टम. इज इट? इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस कन्वेंशनल फाइल सिस्टम. यस, करेक्ट, इट इज डिफिकल्ट. जब हमें किसी पर्सन का रिकॉर्ड कन्वेंशनल फाइल सिस्टम में ढूंढना है तो हमारे लिए हार्ड रहेगा. वेयरएज इफ यू वांट टू फाइंड इट इन डेटाबेस सिस्टम इट्स इजी. हमने जस्ट एक रिकॉर्ड नंबर डाला, हमने एक एडमिशन नंबर डाला, हमने कोई पर्टिकुलर प्राइमरी की का नंबर डाला और हमारा डेटा इजीली हमारे सामने आ जाएगा रिकॉर्ड. लास्ट वन, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ DBMS, डेटा इंटीग्रिटी. इट्स एन एडवांटेज, करेक्ट, इट इज एन एडवांटेज. वी आर हैविंग सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, करेक्ट, वी कैन वर्क ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Reduction in data, correct, because we have no need to require or store the duplicacy of data or duplicate data. It reduces data redundancy, so it is also an advantage. So basically all of these, the answer of this one is all of these. Okay, so these all are the advantages of DBMS system, right? Now if you are having any query related to this lecture, you can comment it below or you can ask me directly on my mail ID.